Yes, Atulji, please begin the meeting. Thank you. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત કર્ણાટક ફેડરેશન, મધ્યપ્રદેશ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન સ્વસ્થ જીવન માટે યોગના વક્તા નીતલબેન શાહ, સ્વાતિજી અને અરવિંદ નરવણેજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત આપણે વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી અર્ચનાબેન મુનશી કરાવશે. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. આભાર અતુલભાઈ. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden Oh, light, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. oh, hidden Oh, love, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is know also is one also one every with other. every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti. Thank you. ધન્યવાદ અર્ચનાબેન. હવે હું આજની સભાની શરૂઆત માટે શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी. Welcome to everyone from Triveni Tuesday Meet. We are very fortunate today that NITAL ji is of course an international yoga trainer, but our very own theosophist SWATHI ji and NARWARE both are also have just doing PhD in yoga. So that is really wonderful. So all three of them know the subject very well. So I request all of you who are present that after they have finished their two parts, you can ask all your queries and questions which you have in your mind. Okay, so I will go ahead. नितिल जी, आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. नितिल जी इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल टीचर हैं, योगा ट्रेनर हैं और योगा इवेंटर भी हैं. वे एक योगिक काउंसलर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं और ऑफिशियली फैकल्टी फॉर टीचर्स जो होते हैं उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपनी योगा इंस्टीट्यूट में वो देती हैं. उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 16 घंटे तक कंटिन्यूस योगा सेशन योग में किया हुआ है 2021 में. साथ ही वे एक एनर्जेटिक टीवी एंकर भी है, न्यूज रीडर भी और रिपोर्टर भी है और प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं दिव्यांग न्यूज चैनल की. प्रेसिडेंट है चांस एकेडमी जो फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए काम करती है और वो इंटरनेशनल डायरेक्टर है. पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन है और फाउंडर है ACI मुंबई की. वो आज तक वर्किंग करती हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए और वेरियस योगा सेशंस का उन्होंने लिए हैं जब कोविड पेशेंट्स थे 3 साल तक. और फ्री ऑनलाइन मॉर्निंग योगा सेशन अभी भी सिखाती हैं, चलाती हैं. सूर्य नमस्कार के सेशंस होते हैं पिछले 3 साल से सुबह सवेरे और बहुत सारे उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं. हम बहुत आभारी हैं कि आप आज हमारे पास आई. अपना व्यक्तित्व आप शुरू कीजिए. पहले 18 मिनट पार्ट 1 होगा, फिर स्वाति जी आएंगी 10 मिनट में समराइज करेंगी, फिर आएंगे अपने अरविंद जी, वो भी 10 मिनट में समराइज करेंगे और पुनः स्वाति जी वापस अपना पार्ट 2 लेकर आएंगी प्रेजेंटेशन पर और क्रमानुसार दूसरे स्पीकर्स भी आएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. तो शुरू करते हैं आज का योग फॉर हेल्दी लाइफ. थैंक यू. Thank you so very much, Taral ji, and the whole team, Atul ji, Archana ji, and we'll start with the yogic prayer. We do have with us one of my very dedicated student, I would say, Dolly Sehwani from Philippines, who's going to take the prayer. Dolly ji. Yogena chitta
चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं मम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि. Thank you very much, Dolly ji. This prayer in itself is an invocation to Maharishi Patanjali, who is himself a great sage who brought yoga to our lives. So the prayer says that, let us all bow down to the great sages of Patanjali, who gave us yoga for peace and purity of mind, who gave us grammar for clarity and purity of speech, who gave us medicines through Ayurvedic knowledge for perfection of our health. Let us all bow down to Patanjali, who is himself an incarnation of Adi Shesha, who has human form in his upper body with a conch shell and a chakra in his arms. So, taking the blessings of Lord Patanjali, Maharishi Patanjali, we start our yogic session. So, yes, namaste once again to everyone. And today, first of all, happy Independence Day to you all. And Independence Day, we always learn about being independent. Being independent from what? Being independent from Britishers. That was a long backstory. Today, we need to get independent from all the vibes that are there around us, which are killing us from inside, which have binded us from inside. And for that, yoga is the best choice. Yoga is not only doing some exercises, but yoga is a way of living. So what is actually yoga? Yoga kya hai? What do you mean by yoga? So would anyone want to participate and answer something? These are a few questions which we might be having. We might be able to think about what is yoga. If anyone wants, can unmute and just say something. Yes, Abhaji? Yeah, ma'am. Yeah. Just yoga, one word. Yeah. Is a Nitalji, union. Nitalji, Yoga is a union. Union Nitalji, with ourselves. Union with our being. Yes, Taralji. Abhaji, Nitalji, you Yeah. don't take any questions in between. We'll have a question answer session after the session. Otherwise, we won't be able to complete. Okay. Sorry, Perfect. Abhaji, you can question after the speakers have spoken for both the timings. Thank you so much. problem. Yes. No problem, Yes, Taralji. No problem. Because she asked. yeah. Yeah, but Nitalji doesn't know that, that the Yeah. question answer is Yeah. after the session. Thank you. True. That's true. Thank you. Okay, fine. Thank you so very much. So yeah, so what is yoga? Many of us have always a question in our minds. Is yoga something regarding your breathing? Maybe meditation, mind management. Maybe it is the asanas, the postures. Some people also think about food, diet control. Some people might think about yoga just for weight loss or maybe weight gain. So there are a lot of conceptions. I won't say misconceptions, because each and everything is yoga if it is done in the right way. Everything that you do in the correct way is actually yoga. But according to our literature, what yoga is that? Yoga is
derived from the root word yuj dhatu, yuj samadho. Yuj samadho. Yuj means what? Union. And what I think Abhaji was also describing over here. It is union. Union of your mind with your breath. Union of your mind with your body. Today, what's the problem with us is our mind and body are not connected. Our mind is connected with the external world, but not taking care of your own body, due to which there is an imbalance in your own body. So what yoga says is there needs to be a union, a connection between your mind and your body, and at an advanced level, your consciousness gets connected with the universal consciousness. So connecting to the universe, to the universal power, you can call him as your God, your Almighty, anything that you want. So connecting with that supreme power is yoga. Yoga has a lot of definitions. So Bhagavad Gita, Lord Krishna defines yoga as samatvam yoga uchyate. Samatvam means what? Balance in whatever you do is yoga. It could be anything. Eating in balance is yoga. Sleeping, resting in balance is yoga. Working in balance is yoga. Doing any damn thing that you're doing in your life, but in the correct way, in the proper amount, at the correct time, is yoga. Lord Patanjali, in his Patanjali Yoga Sutra, has described yoga as yogas chitta vritti nirodha. Chitta, the mind, the vrittis, all the conceptions that we have built up over here. And to nirodha means to control those vrittis is yoga. Again, in Bhagavad Gita, Lord Krishna has also defined yoga as yogaha karmeshu kausalam. Doing work, whatever you are doing, at your excellence is yoga. Give your 100%, whether you are doing a very small job or a very big job, whatever you are doing, do it with your full potential. And yes, that is what yoga is. So we have lots and lots of conceptions over here. We have lots of definitions of yoga given by a lot of people. And that is what yoga is. Everything, a way of living. So today what we are going to discuss over here is the different types of yoga that we have, the different types defined in different texts. Karma yoga, where you do your work at your best. Bhakti yoga, some people have a spiritual concept, and that is also the way which leads you on the path of yoga. Jnana yoga, accumulating the correct knowledge, that is Jnana yoga. Kriya yoga, doing a lot of kriyas. We do so many exercise, some Kapalbhati, and there are a lot of Jalniti. So a lot of kriyas we have learned through the yogic path. So all this are your Kriya yoga. So there are different ways which yoga takes you. But where does yoga take us? That is a question. Why should I be doing yoga? So over here comes the most important thing to learn about, and that's the 8 limbs of yoga. The 8 limbs which leads you to the ultimate goal. So what are these 8 limbs of yoga? So basically, if
the whole day will be less for us to discuss about that one topic. But because we have a shortage of time, what we'll be doing is we'll be summarizing the whole thing right now, just learning a few things. And then if we are interested, we can actually explore each of these things in detail in the future. So the 8 limbs of yoga over here are Yama, Niyama, Asana, Pranaya, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Yeah. Can we please keep ourselves muted? So the 8 limbs of yoga are Yama, Niyama. So what is very, very important, what we have thought yoga as a general human being is what? We do some asana, we do a nice namaste, there are some hard postures, some easy postures, and that is what we always thought is yoga. But yoga is not limited to the asana. Where is asana? Asana over here, can you see my mouse moving? Asana is the 3rd stage of yoga. So before performing a asana, what is necessary for an individual is to follow Yama and Niyama. What is Yama? Your correct behavior towards other people is Yama. Niyam, you should follow some principles for your own selves. For example, I'll just give you an example because it's easy to understand things with examples. Just think about a situation. I have a yoga class at 6 o'clock in the morning. And what I do, I want to be a very regular yogi. I'll wake up at 5 o'clock and I'll be doing my yoga. But I have a very bad schedule. I sleep 1 o'clock at night. I did a party and I slept at 2 o'clock at night. Now, can I wake up at 5 in the morning and perform my yoga? I've broken my niyama, so my body is not prepared for the asana. Correct? This is just one example. It could be, I could have, maybe I have a yoga class at 10 a.m. I'm a lazy person, suppose. And I have a yoga class at 10 a.m. And what I do is at 9:30, I have a nice, must heavy breakfast, some butter, paratha, paneer paratha, maybe some pakoras. And then at 10 a.m., I sit to do my asana. Can I perform my asanas? No. So there have to be a few niyams which you have to follow so that you are able to do your asana perfectly. There are a lot of niyams which we can discuss if we have time remaining in later stage. So following the yamas, proper behavior with others, niyam, self-discipline, comes the 3rd stage, which is the asana. What does the asana help you? Asana is your posture. Asana is your posture, the sitting posture, the standing posture, the posture in which your body adjusts itself so that you get, what do you get? You get a strength in your body. You might think of, oh, I don't want to do asana, I'm too bored, or maybe I am very tired, and you are not practicing your asana. I'll just go for the pranayam. That is very easy to do. But what happens over there is, I am not able to even sit nicely for 10 minutes. Abhi, right now I'm sitting and oh my God, my back is aching. I'm not able to sit nicely. Oh my God, my hands are paining. I need to lie down. You can't do your pranayams. You can't do your meditation. You won't be able to do anything. So to get that strength in your body, the first thing is you have to prepare your body. And asana practice is to prepare your body so that you can sit nicely for a longer period of time
to perform the proper pranayams and the dhyana. Pranayam is very, very famous. What is pranayam? Pranayam is your breath control. Tasmin sati swasa praswasa yorgati vicheda pranayama. Tasmin sati swas means your inhalation. Praswas, that is the exhalation. The control of the speed of your breath, inhalations and exhalation is pranayama. Very simple. Any change in your regular breathing is your pranayama. So what's the purpose of pranayama over here? When you are doing your inhalations and exhalations, you are connecting with your breath. So with asana practice, we were doing what? We were doing everything that was external. But when we are doing the pranayama, what we are doing is we are now connecting inwards. In the very beginning, we talked about what is yoga. Yoga is a union of your mind and your breath and your body. So to get internally connected, the first stage is your pranayama. To go internal, inside your own self, the pranayama takes you inside. So over here, Yama, Niyama, Asana, Pranayama. This all are the Bahiranga Yoga, the external part of the yoga. And now comes the Pratyahar. Pratyahar takes you from external world to the internal world. Pratyahar is like a doorway from the external steps of yoga to the internal steps of yoga. So turning all your senses inwards is your pratyahar. And then follows the dharana. Now what is that? I have prepared my mind. I have followed all the yamas, niyama. I have prepared my body with the asana. I have controlled my breath. And with pratyahar, I have now connected with my internal self. I have controlled my senses. I have made my senses turn inside. And now follows what is dharana. Dharana is what? Dharana is effortless, focused attention. It is not exactly dhyan, but a stage which will take you to the dhyana. It is like training your mind to do the dhyana, to do the meditation. So for that, what we need is, we might need some objects. You can focus on a point, you can focus on a candle, you can focus on your breath, anything to get your mind focused. That is your dharana, followed by the actual dhyana, wherein you are just meditating. If you know you are doing the dhyana, then you are not doing the dhyana. What is dhyana? I don't know. That is dhyana. If you are able to understand yourself that, wow, I am doing dhyana, then you are not doing dhyana. So that is the complication over here. When I am in dhyana, I do not know what is happening around me, what is happening inside me. I'm just connected with that universe. I don't need to worry about anything. And the dhyan, all these things, why are we doing all these things? Oh my God, itna sara. Oh no. So yes, here comes the actual target now. Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Samadhi is what our ultimate target is. You are now connected with that universal power. Yuja Samadho, union of your mind, your consciousness with the universe. That is what you achieve
by following the 8 limbs of yoga. Samadhi is a very, very universal word, and many people have a misconception about samadhi. Maybe people might think samadhi means what? Going at the Himalayas and you just take the samadhi and now you're not alive. No, that's not samadhi. It has been prescribed in many of the books that maybe the Baba took the samadhi, means he died. No, it is not that death. Samadhi is not death. It is a state of your mind in which you are actually connected with the divine power, after which you are still living, but the external world, the external moha maya will not at all bother you, will not at all make any difference to anything that you are doing. What happens with us is, after a while, no matter whatever you are doing, if someone keeps on saying something demotivating to you, what happens is, after a while, we start getting demotivated. Maybe someone comes and says bad words to you. You might somewhere inside feel bad about it. So these are all our internal feelings. Why? Because our feelings are, our emotions are not in our control. But a person who has achieved that samadhi, nothing in the world matters to him. Example, yes, you can take the example of Buddha. Once he attained that state, after that, someone came, he spit on Buddha. Nothing, no difference to Buddha. Someone came with a big knife and was saying so many bad words to Buddha. Buddha is still smiling. That is the stage of samadhi, where nothing in the world matters to me, no matter whatever happens. I am happy from inside. There is no worries from inside. And that is what our ultimate target is with following the 8 limbs of yoga. So the first 4 limbs are Yama, Niyama, Asana, and Pranaya. These 4 limbs are the Bahiranga Yoga, and the rest 4 Pratyahar, Dharana, Dhyana, Samadhi. Specifically, Dharana, Dhyana, Samadhi are the Antaranga Yoga, the internal, which takes you internalize. That is your yoga, the 8-fold paths of yoga, which gives you the special knowledge of the laws of nature, which gives you special yogic power, which gives you special siddhis by following this. So this were the 8 limbs of yoga. Taralji, if we do have time, I can describe the Yama Niyama in detail. And if we are running out of time, we are running out of time. So 3 minutes more for you to finish. Okay, okay, fine. So Yama, there are 5 Yama. I think the words will be very enough for you to understand. Ahimsa, Satya, Asteya. Asteya means non-stealing, stealing something from someone. Brahmacharya, everything in moderation. And Aparigraha means hoarding of things. So that is, we don't want to hoard things. We don't want to hoard thoughts in our mind. Ahimsa is freedom. Freedom, no hinsa, no fight from your inside. Following the truthfulness inside. Don't steal anything from anyone, because when we steal something, no, there is some kind of fight going on inside. So we don't want to do all those things. These are the yamas that we have to follow, and we have 5 niyama for ourselves to follow, which are what? Self-cleanliness. Cleanliness, not only external, but from internal also.
cleanliness of your thoughts, cleanliness of your mind. Santosh. Santosh is contentment. Have a santosh inside you. Tapa, self-discipline. Swadhyay, always keep on checking yourself, self-study. And Ishwar Pranidhan, surrender to the Almighty always, so that you don't have to fear about anything. Let the God, let the universal power decide what's good for you. So with this eightfold paths of yoga will take us to Samadhi. Namaste. Thank you. Thank you so much, Nital ji. And Swati ji, please आपका वीडियो ऑन कीजिए. Thank you, thank you. एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा स्वाति जी का भी. स्वाति जी भी जो हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ पंडित हैं, इस तरह से मैं कह सकता हूँ, और काफी उन्होंने योग में किया है. उन्होंने बीएससी किया है, उसके बाद एमएससी किया है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन टेक्सटाइल्स. देन उन्होंने एमफिल किया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन टेक्सटाइल्स. उसके बाद वो योगा ट्रेनिंग कोर्स किया है उन्होंने शिव नंदा योग वंदना आश्रम से. उसके बाद उन्होंने योगा स्पेशल नीड्स का कोर्स किया है प्रफुल्ल ऊर्जा एनजीओ से. फिर प्रिजन योगा ट्रेनिंग किया है उन्होंने प्रिजन योगा प्रोजेक्ट में. पेरेंटल योगा कोर्स किया है आध्यात्मा योगा एकेडमी से. योगा फॉर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया है NIMHANS बेंगलुरु से. और योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स उन्होंने किया है, वो भी SYASA डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. और वो PhD इस वक्त इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही है यूनिवर्सिटी से, जो करंटली वो परस्यू कर रही है. तो ये उनका एक पूरा योग की और की स्टडी है. उसके साथ ही वो करंटली जो है वो लेक्चरर भी हैं ज्योति निवास कॉलेज में, वहाँ लेक्चरर हैं और योगा क्लासेस लेती है BA, BSc, BCom और BBM स्टूडेंट्स के लिए. उनका सब्जेक्ट होता है योगा एंड हेल्थ. उसके साथ ही वो एक कोलैबोरेशन किया उन्होंने समीक्षा एनजीओ के साथ, और प्रफुल्ल ऊर्जा भी, वो भी एनजीओ बेंगलुरु का. वहाँ पर भी वो योगा ट्रेनर और थेरेपिस्ट की तरह जाती हैं. पोजीशन है उनकी वहाँ पर योगा ट्रेनर और थेरेपिस्ट की, और वहाँ पे वो थेरेपी के सेशंस कंडक्ट करती हैं. और इम्पैक्ट ऑफ दोज प्रोग्राम्स वेरियस कम्युनिटीज पे बहुत अच्छी तरह से होते हैं, जैसे स्पेशल नीड स्कूल AMC बेंगलोर, रिमांड होम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होम्स, कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रन जो है उनके साथ भी वो बेंगलोर में बहुत काम करती हैं. उसके अलावा उन्होंने माउंट कैरमल कॉलेज जो है बेंगलुरु से, जहाँ पर वो करंटली अभी वर्क कर रही हैं, और उन्होंने जो लेक्चरर की पोजीशन है वो वहाँ पर उनकी है. वो BSc स्टूडेंट के लिए वहाँ कॉलेज करती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक जो है स्वयं विकास के नाम से शुरू किया है, जिसकी वो संस्थापिका हैं. और वो एक सेंटर है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, मतलब स्वयं के विकास के लिए लोगों को टारगेट करता है. वहाँ पर स्वयं विकास के लिए नियमित कक्षाएं होती हैं, पाठ्यक्रम उन्होंने बनाए, उसके लिए कार्यशालाएं होती हैं, और टॉक्स या वार्ताएं भी वो प्रदान करती हैं, जो स्वयं के समग्र विकास, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि होलिस्टिक विकास जो होता है, उसमें मदद करते हैं. स्वयं विकास की विभिन्न गतिविधियों से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हैं, साथ में ब्लिस यू के साथ जुड़ी हुई हैं, और अनेक ऐसी संस्थाएं, शंकर प्रकाश फाउंडेशन ने उन्हें इसके साथ बहुत सहयोग दिया है. तो आइए, हमारी अपनी हैं आप, और स्वाति जी, यू आर वेलकम. प्लीज गो अहेड, यू हैव टाइम फॉर 10 minutes. प्लीज सम अप द फर्स्ट हाफ. थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದ ತಾರಲ್ ಜಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿತಾಲ್ ಅವರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ ಉಸಿರಾಡೋದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ, ಆಸನ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬರೀ ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ, ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಆಸೆ ಪಡ್ದಿರ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಯಮ ನಿಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಏನ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 limbs ಆಫ್ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಮ ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಯಮ ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಬಹಿರಂಗ ಯೋಗ ಅದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ, ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಮ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ 5 ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದೆ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದಿರೋ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾನ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಮುಟ್ಟದಿರ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಪಾರಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡದೆ ಇರೋದು ನಾವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶೌಚ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಂದ್ರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶಿಸ್ತಿಂದ ಆ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಣಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಣಿದಾನ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ.
Yes, Taralji. Yeah, thank you. अभी बस अरविंद भाई आपका वीडियो ऑन है? अरविंद जी? Yes, 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 yes. हाँ, Yes, I am ready. यस। एक संक्षिप्त सा परिचय दे दूं मैं आपका? परिचय की जरूरत नहीं है सर, टाइम का थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं अपन, नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं थैंक यू। अरविंद जी का छोटा सा परिचय दे देता हूँ। वो टीएस मेंबर हैं 1989 से, थियोसॉफी विक्रम लॉज के सेक्रेटरी हैं 2 साल से, और अभी प्रेसिडेंट बने हैं 1 अक्टूबर 2021 से। रिसेंटली उन्होंने मतलब नेशनल लेक्चरर की तरह अपॉइंट हुए हैं और अपना जो नॉलेज है वो प्रोपोगेशन ऑफ थियोसॉफी के लिए यूज करते हैं, खासकर योग के लिए। जो और पूरे भारतवर्ष में वो जाते हैं लेक्चर्स वगैरह के लिए। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने ये कार्य संभाला है और वे पहले बैंक के सीनियर मैनेजर थे। इस वक्त भी वो फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर की तरह उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में अंडर आरबीआई कार्यरत हैं। और उन्होंने एमए किया है योगा से और अब पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, योगा और न्यूट्रिशन दोनों विषय। तो आइए आप हिंदी में इसका समअप कीजिए, आपके पास 10 मिनट है। धन्यवाद। थैंक यू तरल सर। जी, मैं क्या स्लाइड बताऊं, आप बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा वो। जी, बताता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और आज जैसा कि मैं अभिभूत हूं कि आज मुझे योगा पर बोलने के लिए तरल जी ने इनवाइट किया। वैसे तो हमारे इंटरनेशनल लेक्चरर नीतल जी ने काफ़ी कुछ डिटेल बताया है, लेकिन फिर भी चूंकि त्रिवेणी की परिपाटी है कि तीनों लैंग्वेज में टॉक करना है, तो मैं शुरू करता हूं। जैसा कि पतंजलि जी का परिचय, महर्षि पतंजलि का परिचय बताया, जिन्होंने स्पष्टता और वाणी की शुद्धता के लिए, व्याकरण की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया, और जो वैद्य चिकित्सा के माध्यम से शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं, वे जो शरीर, मन व वाणी की अशुद्धियों को दूर करने में माहिर हैं, उन सबसे उत्कृष्ट मुनि महर्षि पतंजलि को हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं। हमारे षट दर्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, न्याय दर्शन और वेदांत, उसमें जो योग दर्शन है उसके आप प्रणेता है महर्षि पतंजलि। पतंजलि ने संयम को ही योग का मूल माना है। हमारे जीवन में संयम का बहुत महत्व है और संयम ही का इंपॉर्टेंस दिया है पतंजलि जी ने। योग एक धर्मनिरपेक्ष, शुद्ध, आध्यात्मिक जीवन दर्शन है। हम महर्षि पतंजलि को बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने हमको जो आज दुनिया में एक योग का एक परचम फहराया, और हमें उसको वाकई में हमारे अमल में लाना चाहिए। हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। जैसा नीतल जी ने कहा है, करना ही चाहिए। कितना कुछ हर जगह योगा का क्लासेस लगी रहती है, लेकिन हम अमल नहीं कर पाते। ये हम में बहुत बड़ी कमजोरी है, इंक्लूडिंग मी। मैं आज स्टूडेंट हूँ, हाँ, स्टूडेंट ही रहूंगा, लेकिन नहीं कर पाता हूँ पूरा। स्लाइड नंबर 1 लगाओ। थैंक यू। जैसा नीतल जी ने बताया कि अष्टांग योग के जो 8 फोल्ड हैं, और हम इसको आगे पढ़ेंगे, और क्या योगा है इसके बारे में उन्होंने डिटेल बताया। योगा क्या है? ब्रीथिंग लेना, सांस लेना, ध्यान करना, माइंड मैनेजमेंट, हमारा जो दिमागी प्रबंधन है वो हमारा फिट होना चाहिए हमेशा। पोस्चर्स, किसी व्यक्ति के बैठने की और खड़े होने की जो स्टाइल है, वो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए, यही योग है। डाइट कंट्रोल, जैसा नीतल जी ने बताया कि हमारा डाइट कंट्रोल होना चाहिए, क्या खा रहे हैं उस पर विचार करें हम। वेट लॉस,
हम सब जानते हैं हमारा हमेशा वेट लॉस होना चाहिए, अदरवाइज हम हमेशा बीमार रहेंगे। वेट गेन, जिनका वेट कम है वो वजन बढ़ाए, ये सब करेक्ट होना चाहिए, यही योगा है। जैसा कि नितल जी ने बताया और ये पतंजलि जी के समय से आ रहा है कि ये योग संस्कृत के वर्ड से बना है, युज धातु से। इसकी बहुत से ग्रंथों में परिभाषा अलग अलग दी है। भगवद गीता के अध्याय 2 में 48 पेज पर यह है कि लॉर्ड कृष्ण ने डिफाइन किया है, समतम योग उच्यते। हमको समभाव में रहना है, दुख और सुख में हमेशा समभाव में रहना, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति प्राकृत वस्तु में ऐसी आसक्ति ना हो। महर्षि पतंजलि ने जो हमें उनके जो समाधिपाद, साधनपाद और ये जो पाद चारों बताए, उसमें चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। वो कहते हैं सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कोई आसक्ति मत रखो। भगवद गीता का यहाँ योग के साथ में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। योग चित्त वृत्ति निरोध को वो कहते हैं कि चित्त वृत्तियों में वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं, जिनमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। बस ऐसे चित्र पर अगर नियंत्रण हो गया तो आप सच्चे योगी हो गए। हम आगे चलते हैं। जैसा सिस्टर नितल जी ने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, गीता में भी इसका उल्लेख है। कर्म योग, हम सब जानते हैं, हम कर्मयोगी बने, भाग्य के भरोसे न रहें। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति भक्ति, उनकी भक्ति करना। अब यहां हम विस्तृत आज हम भक्ति योग की चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भक्ति योग बहुत तरीका का होता है। किसी भी रूप में ईश्वर की भक्ति करना भक्ति योग कहलाता है। ज्ञान योग, ज्ञान योग में हम सब जानते हैं कि जब हम ज्ञान की लालसा हम में रहती है तो हम निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर जाएंगे। हमेशा स्टूडेंट बनकर रहें और ज्ञान को एक्सेप्ट करते रहें। क्रिया योग, जैसा सिस्टर ने बताया कि सभी क्रियाओं को करना ही क्रिया योग है। 8 लिम्स, योग के 8 जो लिम्स बताएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? दूसरों के साथ सही बर्ताव करना ही यम कहलाता है। हमने देखा है कि कहीं डायरेक्ट आसन का क्लासेस शुरू हो जाता है, योगा क्लासेस शुरू हो जाती है। बिल्कुल नहीं, पहले हमको यम और नियम का पालन तो करें आप। तो यम में हमारे 5 जो है पॉइंट्स हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम की डेफिनेशन यह है, शरीर और अंतःकरणों से संबंधित व्यवहारिक विषयों के प्रति शुचिता, स्वच्छता, सात्विकता और पवित्रता बनाए रखें। दैट इज नोन एज नियमा। आसन, किसी विशेष मुद्रा में देर तक बैठकर क्रिया करना आसन कहलाता है। चौथा, प्राणायाम। प्राणायाम स्वर शुद्धि। अब यहां हम प्रैक्टिकल का आज हमको अलाउ नहीं किया है, कितना बढ़िया है प्राणायाम। स्वर शुद्धि, कंठ भ्रामरी, रक्त शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर ब्लड इन योर बॉडी, आर्टरीज में ब्लड
प्योर जाना चाहिए, ये प्राणायाम है। प्रत्याहार, अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित करना। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी टंग है, हमारा मुख है, हमारा जेनिटल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ है, इनको कंट्रोल में रखना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, जैसा कि सिस्टर ने बताया, कंटिन्यूअस फ्लो, ये अपने ध्यान की पहली स्टेज है और इसको हमको करना ही चाहिए। समाधि, साधक का चित्त अपनी सारी चंचलता त्याग कर सुपर कॉन्शियस में आ जाए, महाचैतन्य अवस्था में आ जाए, वही समाधि कहलाती है। यह ध्यान और धारणा की लास्ट स्टेज है। ध्यान का मैंने जैसा बताया, किसी लक्ष्य पर विचार करते करते उस स्थिति पर आ जाना, विचार गायब हो जाना, ध्यान कहलाता है। कोई विचार नहीं, मन आपका सेंट्रलाइज हो गया, ध्यान कहलाता है। व्यक्ति निर्विचार अवस्था में आ जाए, यही ध्यान है। नेक्स्ट, समाधि में चंचलता बिल्कुल नहीं। समाधि, यस सर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा हम सब जानते हैं, नॉन वायलेंस, फ्रीडम फ्रॉम हार्मिंग, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। सत्य, ट्रूथफुलनेस रहे, किसी भी स्थिति में ट्रूथफुलनेस रहे। असत्य, नॉट स्टीलिंग, किसी की चोरी नहीं करना, किसी की पराई वस्तु को अपना न बनाना। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का सीधा सा मीनिंग में ये संधि विच्छेद हो रहा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी आत्मा शुद्ध होना चाहिए, दैट इज नोन एज ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह तो कॉमन वर्ड है, अपरिग्रह। हर घर में मैंने देखा है बहुत सामान अनावश्यक खरीदना, अपरिग्रह। नॉन होर्डिंग, फ्रीडम फ्रॉम ग्रास्पिंग, जो आवश्यक हो वही हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। नियम, स्वच्छता, क्लीनिनेस, संतोष, कंटेनमेंट। हमेशा कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी, बस संतोष रहे, लेकिन हम संतोष नहीं रह पाते। तपस, सेल्फ डिसिप्लिन। तप का ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ घर बार छोड़कर तप करने चल जाए गुफाओं में, हिमालय में, बिल्कुल नहीं। परिवार में रहकर ही हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, दैट इज नोन एज तप। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अच्छी किताबों को पढ़ना, अपनी सेल्फ स्टडी करना। अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज नोन एज स्वाध्याय। ईश्वर प्राणिधान, जैसा कि अभी सिस्टर ने बताया, नितल जी ने, अपने आप को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर देना, दैट इज नोन एज ईश्वर प्राणिधान। धन्यवाद। so much. बहुत सटीक टाइम पर खत्म हुआ। और नितल जी, प्लीज गो अहेड विद द सेकंड हाफ। थैंक यू। Thank you so very much, Swati ji, Arvind ji, for elaborating it in the different languages so nicely. And yes, so we will move ahead with our second half. The second half is everyone's favorite, and that is what we think about yoga. As what yoga is, we think it's asana, the asana practices. So normally if you go for a yoga class, what you will be practicing? You'll be practicing the asanas. So now let's learn how to do the asanas and how not to do the asanas. Yes, you will learn doing all the postures, but there are a very few people who actually do the exercise as asana, or else you are just doing exercising. I would say out of 100 people who are practicing yoga, going to a yoga class,
95% people are not doing yoga, they are doing exercises. They are not doing asana practice, that what Maharishi Patanjali has taught us. Maharishi Patanjali has given the 8 limbs we just saw, Yama, Niyama, Asana. So he has defined asana. What is asana? Do you know what is asana? He has already given a very nice definition about asana. Asanas, what is asana? Asanas are all the physical positions we assume during our yoga practice. You are sitting straight, you are twisting your body, you are raising your hands. All these things are your asana. But what Maharishi Patanjali describes asana in his Yoga Sutra 2.46 is Sthira Sukhama Asana. A steady and comfortable position is what we define our asana. The definition of asana, very simple. Sthira Sukhama Asana. The position in which you have the feeling, the anubhuti of Sukham. I am sure everyone knows what Sukham is. Sukham means happiness, the happiness, ultimate happiness from inside. If I am into the posture nicely and I feel, wow, this is such a beautiful position, I enjoy being in that posture, that is my asana. Now, if I'm sitting like this and oh my God, my hands are aching, oh God, and the teacher is still counting 1, 2, and I'm thinking, oh my God, come on, fast count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Everyone thinks like that. So that you're not performing the asana. What asana is, I'm into the position and I don't want to leave my position. I just want to stay in this position. That is what a perfect asana is. I should feel that sukham from inside. And now when we talk about asanas, if we talk about categories in the asanas, we have cultural asanas where all the different positions are there. You can do the asana sitting, you can do the asana standing. Prone position is where you are sleeping on your abdomen. Ulta let ke jo karte hai. Supine position is when you are lying down on your back and doing the asana. I'm sure everyone must have practiced yogasanas in all of these positions someday in your life. Then comes the meditative asanas, wherein I'm sitting into the Padmasana, close my eyes and doing nothing, no positional change, but I'm going inward. So there are a few asanas which are meditative asanas. There are a few asanas which are relaxing. Very, very common example, Savasana, fast. Hath pair phailao and then just go down, relax. There are quite a few asanas where you can relax yourself from inside. So these are the categories of asanas. But no matter whichever category you are doing, when we perform the asana, these are the 4 main bhava with which you have to perform the asana. Yes, when these 4 bhava are added to the position, they become asana. This is what is missing out in your practice. Listen carefully, look carefully, and try to adopt this practice in future so that you are not amongst that 95% people who are not doing yoga and are doing exercise. And you will be doing yoga once you learn this bhava. So we'll start with the very first bhav, dharma bhav. Okay, before moving on to dharma bhav, jnana bhav, I'll take my favorite one. The first is the vairagya bhav. Why I am taking this is because this is something which is very easy to understand. Very easy to understand, but very hard to apply. So luckily today we are not practicing. So to understand this is going to be very easy for you. But when you will practice, you will find it, oh God, it's not that easy as it sounds to be.
And I'm sure everyone has practiced the Vairagya Bhav in their life someday, some point, while you are praying to your God. When we are in front of the God, we bow down. Oh Lord, I am your child, you help me. There is a time so critical where you are not able to do anything. And we just go to the temple, we bow down in front of the God and we say, okay, God, now I give up everything. Now you take over. You take over the control. That is the Vairagya Bhav. Vairagya is not that Sadhu Baba and all this, okay? We have just named the Bhava as Vairagya Bhav, means a feeling of let go. No ego from inside. I am something. I am doing the asana. Till you are doing it, you don't have the Vairagya Bhav. You don't have that let go feeling. Let go of everything from inside. All kind of attachment, all kind of fears, all kind of egos. There is a situation in your life. Now what happens is, I go to the office, my boss shouts at me for no reason or for some reason, whatever it is. But what is happening in my mind? My boss, he scolded me. My boss, he scolded me. Now I'm doing my yoga practice and I'm doing the asana. But where is my mind? My mind is still thinking, my boss said this to me. How did he say this to me? Today I'll go to the office and I'll show him that he was wrong. And I'm planning all of those things in my mind. Am I doing the asana? I'm not doing the asana. Why? Because I hold all of those things. So what Vairagya Bhav tells you is, let go. Boss said something, forget it. He said something. While I'm doing the asana, I am doing my asana. And I just let go all of those grudges in my mind. I have an ego inside me. I am an international yoga trainer. I am the best. And now I go down. I cannot do yoga. That is not yoga. Even if I'm doing a perfect posture, that is not yoga. That is just an exercise. So just let go. Even if I'm not able to touch down, it's not always necessary that you should be touching down. No text says that you should touch the floor to make it perfect. It is the feeling that you have from inside. Just let go. And that is what Vairagya Bhav is. Any asana that you do with that feeling of complete surrender to that Almighty. Oh God, now you are the supreme power. I don't need to worry about anything. I just give up everything. I am there in front of you. You take over. When you give your entire control to Him, that is when we see it as Vairagya Bhav. So that was my favorite, because when I do this, I feel completely relaxed. And when does the Vairagya Bhav actually come inside you? The Vairagya Bhav will come inside when you perform it with full Dharma Bhav. What is Dharma Bhav? Dharma Bhav is the self-discipline from inside. The duty towards your own self. What is Dharma Bhav? Dharma is following a particular discipline. That is Dharma Bhav. So now what happens is, why are you doing yoga? Okay, you joined a yoga class. So why are you doing yoga? Someone will say, my doctor suggested I have to do yoga to stay healthy. So I am coming to the yoga class. And then during the yoga class, oh my God, when will this class get completed? Yeah, how many of you think that? I know that is non-dharma bhav. Dharma bhav comes from inside. I have to do yoga. Why? Because
I want to do it. I'm doing it for my self-development. I'm doing it for my own self. I'm not doing it because the doctor told me. I'm not doing it to impress someone. I'm not doing it to do a show off of my postures. I'm not doing it for anyone in the world. I am doing it for my own self, where the 8 paths of yoga will take me towards that ultimate goal of samadhi. That is my target. And that is why I'm doing my asana practice. The asana practice will have to be done with the dharma bhav. A weak mind cancel off the dharma bhav. If you have a weak mind, completely gone. You will stand up from between. You might leave the practices after a few days. Nothing is happening with this yoga. Let me run. And now I'll go and join a gym. No, that is not dharma bhav. So a dharma bhav needs your mind to be strong and a full dedication towards your posture. So any meditative posture that I'm sitting into, right now you can see the picture of a nice Padmasana. So this has to be done with a full dharma bhav. I'm doing it for my own development. That is the very first bhava which is needed for any asana practice, is dharma bhav. The second is the jnana bhav. Jnana bhav means what? Knowledge. Jnana word means what? Knowledge. Knowledge means what? Your knowledge about your posture. So now when I'm into the posture, where my hands are, where my fingers are, where my vision is, whether I'm inhaling, whether I'm exhaling, where my feet is, all this thing is my self-awareness about my posture. Where my mind is, where my thoughts are, is my awareness about my posture. So while you're doing the asana, the very second requirement is what? The very second requirement is your knowledge about your posture. It could be anything. It could be a few thoughts. It could be also your posture could be wrong. Sometimes, you know, what happens is when I am raising my hands, okay, I'm raising my hands like this. And what happens is I'm trying to stretch. Yeah. Now, what is this? This is lack of self-awareness. I did not focus where my stretch is happening. If I'm like this, what is happening is, oh my God, I'm pulling my cervical. I'm inviting problems for me. So while I'm doing the posture, I should be in a perfect harmony with my breath, with my positions in such a way that I'm not damaging any part of my body. It doesn't mean that you have to do it perfectly. Maybe I am not ready. My hands are weak. I can keep it like this also. It is perfectly okay. But this is not okay. I hope you can understand the difference. And that is where Jnana Bhav comes into picture. You have to first analyze, learn to analyze yourself. Then and then only you will be able to improve yourself. Now, I don't know where my posture is. While I'm doing the asana, what happens is, I am into the posture and where is my mind? What is happening in the kitchen? What is happening over there in the office? That is what we always think about, right? That is non-Jnana Bhav. Jnana Bhav means stay over here, check your own self, stay connected with your body. And when you are with the Jnana Bhav, performing with the Dharma Bhav, then and then only you can gain the Vairagya Bhav. Or else you cannot gain the Vairagya. Why? Because I am not over here.
I don't know what I'm doing. How can I get the Vairagya? So to get the Vairagya, the Jnana Bhav, the Dharma Bhav are most important. And once you gain that Vairagya Bhav, once you gain that Vairagya Bhav, after that comes the ultimate Aishwarya. Aishwarya is confidence from inside. You feel like you have broken off all the bondages, open out of all the clutches of all your kleshas, and with full strength, with full confidence, release all the fears out of you, and you gain the Aishwarya Bhav. Have you ever seen a true yogi in front of you? What will you see as a true yogi? A true yogi will be full of confidence. He'll not have that fear of mind. So, I think, sorry, can we please mute ourselves, people? No, just a minute, just a minute. Yeah. I'm sorry. Ashtanga, please mute. Okay. Everybody, please. Yeah. Thank you so much. So, we were talking about Aishwarya Bhav and what Aishwarya is. Nitalji, 5 minutes left, huh? Yeah, we have already covered all the bhavas. Okay. So, Aishwarya Bhav is your inner strength, your inner confidence. And when we see a true yogi, you will not see any sign of fear, on any sign of tension, any sign of worries on his face. No matter whatever the situation is, he'll be cool, calm, and full of confidence, full of Aishwarya. So, how does the Aishwarya Bhav develop inside you? It develops with the practice of Purna Vairagya. When you have let go everything, no worries, everything, we have given off every worries, problems, everything, we released everything. Now, you can get the Aishwarya Bhav. And so, before we end, why are we discussing all these bhavas over here? When you practice any asana, you have to have all these 4 bhavas included in your asana. And just to make things simple, what we do is we bifurcate a few asanas with a few bhavas so that we can practice the bhava. Because practicing all the 4 bhavas together might be a difficult job for us. So what we'll do is, any meditative posture that you are sitting into, you have to bring that dharma bhav into yourself. When you have any postures where your awareness, concentration is needed, that is where we apply the Gyan Bhav, the self-awareness. Whenever you have any asana where you are doing a forward bending asana like the Mandukasana, the Hastapadasana, we have the child pose over here. So many asanas where you are doing forward bending. Those asanas are best to bring the Vairagya inside you. And any asanas where you raise your chest up, that is your Aishwarya. It's not actually only this asana, but this asanas, you can develop these feelings. And whenever you practice any asana, remember to practice it with the bhav. Try to understand the meaning of the word, the name of the asana, and apply that name while you are practicing the asana. For example, if I'm practicing probably a Parvatasana, I should feel like a Parvat. What are the qualities of a Parvat? A mountain, strong, confident. If I'm practicing a tree pose, I should feel like a tree. How's a tree? A tree is standing straight without moving its roots. Though the branches are moving, the leaves are moving, the tree, the dedication, the giving nature of the tree.
If you are practicing the Bhujangasana, Bhujanga is what? Cobra, like a cobra, ready to hiss and fearless from the world. So there are so many asanas. Each and every asana has a name. Try to apply the name. Apply it while you are practicing the asana so that you gain those qualities inside you and you become a true yogi. So yes, as we discussed in the very beginning, these 4 bhavs are missing. If missing in your practices, do apply them. And after that, please do share your results with me, how you felt after practicing this asanas. So thank you once again for listening to me. Yeah. And yes, we do have our translators also. We still have a session of yours remaining after Swati ji and both are complete. So be there. And yes, Swati ji, you can go ahead. Just ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿತಲ್ ಜಿ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಸನಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಸನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಆಸನ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವಿನ್ನೂ ಆಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಥಿರಂ ಸುಖಂ ಆಸನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಆಸನ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಸುಖಾಸನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಶಶಾಂಕಾಸನದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಆಸನ ಆದ್ರೂ ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಳಮಳ ಇಲ್ದಿರ ಅಥವಾ ನೋವು ಇಲ್ದಿರ ಸುಖವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಆಸನ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಆಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಂತರ 3 ತರದ ಆಸನಗಳು, ಆಸನದ ಬಗೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಸನಗಳು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಳು, ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಆಸನ, ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆಸನಗಳು, ಸುಖಾಸನ, ಸಿದ್ಧಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಇವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆಸನಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಸನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಸಿದ್ಧಾಸನ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾಸನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಧ್ಯಾನ ಆಸನಗಳು. ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆರಾಮ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಸಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇಹ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ 4 ಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಕರ್ಮ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಾ, ಅದೊಂದು ಕರ್ಮ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ 100% ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಭಾವ. ಸೊ 100% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಭಾವ. ಆ ಧರ್ಮ ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಮಾಡುವಾಗ ಆಸನಗಳು.
ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾವ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಭಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ನಮ್ಮೊಳಗ್ ನಾವು ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 100% ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಭಾವ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ. ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗೋದು. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನಗಳು. ಶಶಾಂಕಾಸನ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ ಆಗ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಮಾಸನ ಆಗ್ಲಿ, ಅಂತದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿರ ವಿದ್ಯೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಂಬೇರ್ತನ ಇರ್ಬೋದು, ಆತರ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೇಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಮಿತ, ಅಹಂ, ಈಗೋ. ಸೊ ಅಹಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 2ನೇ ಕ್ಲೇಶ. ರಾಗ ಅನ್ನೋದು 3ನೇ ಕ್ಲೇಶ. ಅದು ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಧನಗಳು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ಯೋಗ, ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಕಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವ. ಮತ್ತೆ 4ನೇದು ದ್ವೇಷ. ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ದಿರ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರ, ನಾವೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದು 4ನೇ ಕ್ಲೇಶ. 5ನೇ ಕ್ಲೇಶ ಅಭಿನಿವೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನೇ ಆಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಡುವುದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವೇ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು 100% ಅದ್ರ ಕಡೆನೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಧಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ.
ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿತಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सर आप म्यूट हैं. स्वाति जी, इट वाज रियली वंडरफुल. और अरविंद जी आप आगे बढ़िए और मैं स्लाइड बताता रहूंगा टू द पॉइंट. थोड़ा सा समय बचा लेंगे. धन्यवाद. अनम्यूट कीजिए सर. अनम्यूट. आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए सर. हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही. शायद आपका वो ये ब्लूटूथ बंद हो गया होगा. देखिए उनको, बुलाइए किसी को. हेलो अरविंद, उसके बिना कर लीजिए, स्पीकर वो निकाल दीजिए. हेडफोन निकाल कर करें. उसको वहां से निकालना पड़ेगा पीछे से. बोलिए. अब आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, बोलिए सर. या प्लीज गो अहेड. ये हमारा सेकंड सेशन हिंदी में मुझे दिया है. इसमें आसन क्या है, इसकी परिभाषा के लिए हम सब जानते हैं कि हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि करना ही आसन कहलाता है. और आसन हमारी फिजिकल बॉडी से हम इसको 4 तरीके से कर सकते हैं. बैठकर, खड़े होकर, पीठ के बल और पीठ के बल. तो इसको शॉर्ट में मैं कंक्लूजन कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय सीमा है. स्टैंडिंग में हम जो आसन करते हैं फिजिकली, उसमें वृक्षासन जैसा कि सिस्टर नितल ने बताया, ताड़ासन है, गरुड़ासन है. वो प्रत्येक आसन का जो यहाँ एक मैं खास चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, किंगडम है, उनके नाम से आसन रखे हैं. जस्ट लाइक गरुड़, भगवान गरुड़ के नाम से गरुड़ासन. ताड़ासन जो वृक्ष है, सिस्टर ने उसका बताया था कि किस तरह ताड़ासन करना चाहिए. ताड़ासन वृक्ष के नाम से रखा है. गरुड़ासन आपका वृक्षासन, विश्वामित्रासन भी कहते हैं इसे, वो भी हम स्टैंडिंग पोजीशन कर सकते हैं. एक क्रिया होती है नवली क्रिया, वो भी हम स्टैंडिंग कर सकते हैं. नवली क्रिया भी 2-3 प्रकार से होती है, लेफ्ट नवली, राइट नवली और सेंटर नवली. ये हम खड़े पोजीशन कर सकते हैं. सिटिंग में सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, ये हम सिटिंग स्थिति में कर सकते हैं. पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तासन का कहते हैं कि इसमें अगर किसी को वेरिकोन्स का प्रॉब्लम है तो पश्चिमोत्तासन की गारंटी लेता है योग कि दूर हो जाता है. उष्ट्रासन, उष्ट्रासन बोले तो आपका ऊंट, संस्कृत में उष्ट में बोले तो ऊंट. उष्ट्रासन भी आपके बैकबोन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण है. उसके बाद मंडूकासन. जब हम मंडूकासन करते हैं तो हमारा जो पैंक्रियाज है, बॉडी ऑर्गन्स, उससे इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है. वज्रासन, वज्र की तरह हमारा शरीर हो जाता है. अनुलोम विलोम हम सिटिंग करके कर सकते हैं. कपालभाति हम सिटिंग करके कर सकते हैं. लेकिन जैसा सिस्टर ने बताया नितल जी ने कि सही होना चाहिए, वो अगर हम गलत करेंगे तो उसका हम ना तो हमको रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कि उसका कोई विपरीत हमारी असर हमारी बॉडी पर हो जाए. नेक्स्ट स्लाइड. भावास जो है, 4 भावास बताए हैं: धर्म भाव, जन भाव, ज्ञान भाव, वैराग्य भाव और ऐश्वर्य भाव. डीपर स्टैंडिंग ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भावास. हमारा डीपर स्टैंडिंग होना चाहिए हायर कॉन्शियसनेस के प्रति, दैट इज नोन एज भावास. फीलिंग्स और एटीट्यूड्स हमारा होना चाहिए, दैट इज नोन एज भावास. निष्काम भाव से उत्प्रेरित होकर कर्तव्य का पालन करना ही धर्म भाव है. ज्ञान भाव, मनुष्य के अंतःकरण में
उत्पन्न होने वाली ज्ञान क्रिया का भाव ज्ञान भाव कहलाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान भाव बहुत ही आवश्यक है। उसका साक्षी भाव होना जरूरी है। आप अपने अंदर बाहर उसको जागृत करते रहें। ज्ञान भाव जागृत होने पर हम सत चित्त और आनंद में फीलिंग करेंगे, सच्चिद आनंद। लास्ट है ऐश्वर्य भाव। जब हम तीनों भाव में परफेक्ट हो जाएंगे, हमारी हायर कॉन्शियसनेस में हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, हम स्वावलंबित हो जाएंगे, हम समृद्ध हो जाएंगे, हम सफलता प्राप्त करेंगे हर क्षण, हर फील्ड में सौभाग्य, संपन्नता, वैभव मिलेगा, हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। दैट इज नोन एज ऐश्वर्य भाव। थैंक यू सो मच। टाइम का लिमिटेशन है, बहुत होता है। थैंक यू स्वाति जी, या जस्ट पुट ऑन द स्पॉटलाइट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मजा आया। नितल जी, आपने बहुत ही उसको स्ट्रक्चर्ड किया था, इतने बड़े विषय को शॉर्ट में किया। और जैसा आपने बीच में बोला था कि प्रैक्टिकल करना और ये करना वो है, तो हमारे पास अब आप तीन जनों की एक टीम तो कम से कम तैयार है। और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि शायद कुछ प्रैक्टिकल या इसके और अंदर जाएं। हर जो आपने 8 लिम्स बताए थे, विशेषकर वो 8 लिम्स को एक एक करके, या एक स्पीच में 4-4 लिम्स को भी ले सकते हैं, जैसा आपने वो किया था। यहाँ पर काफी लोग हैं, लेकिन एक छोटा सा विषय और लेना चाहूंगा। हमारे बीच दिनाकरण जी हैं। दिनाकरण जी हमारे थियोसॉफी सोसाइटी के, मैं इनको बोलता हूँ कि वर्चुअल लाइब्रेरियन है। मतलब ये रोज किताबों को वर्चुअली शेयर करते हैं। तो नितल जी, आपको भी आनंद आएगा कि थियोसॉफी में भी कुछ किताबें हैं। पहले कौन सी किताब लेना चाहेंगे दिनाकरण जी? जस्ट एक शॉर्ट में वो 4-4, 5-5 लाइन में उसके बारे में बताएंगे। यस दिनाकरण जी, विच बुक? Namaste, Taralji. I would like to congratulate Nitalji for giving this inspiring lecture on this happy Independence Day, which liberates us from all our fetters to tread the path of yoga. TS has published many books. TS means Theosophical Publishing House has published many books on yoga since Dr. Besant. The first book I would like to introduce is an introduction to yoga. Dr. Besant's convention lectures at the 32nd annual convention at Varanasi. This gives you an introduction to, we should consider the time of publication of this book when the West was quite strange to yoga, Bhagavad Gita, Upanishads, philosophies. Such time she introduced yoga to the Western world and also to the Indian students of yoga, Indian students of yoga, especially in the colleges, who were taught that Indian philosophy is inferior to other philosophies, Hindu religion is inferior to other religions, and all teachings of the Indian tradition is nothing but cock and bull story. Such in those periods, she introduced this wonderful book to yoga. It's a summarized book. That is wonderful beauty of the Besant lecture. She summarized all these Patanjali Yoga Sutras, Samadhi Pada, Sadhana Pada, and Vibhuti Pada. All these padas she summarized in this small book, which is very attractive for others to read. Which other book you would like to introduce, sir? Yes, sir. I mean, this book. This is Flower of Yoga by Yante H. Hoskins. Many of you had the fortune to listen her during the international convention. She was the director of the School of Wisdom for a long period. Just like our Nitalji explained these Yama Niyamas, Yama, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraham, Shaucha, Sandosha, Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Like that, she took classes, 3 months, I think, on yoga, especially Raj Yoga, at the School of Wisdom, shortly known as SOW. So
at our international headquarters. She summarized those teachings in this wonderful book, along with a list of books which are quite not familiar with many of you. She includes many books by Indian philosophers, Indian theosophists like Wallace, I.K. Taimani, Wallace Slater, and all those people. But she gives an elaborate list of books also, how to read all these books. Especially, I would like to congratulate NITAL for grouping all these asanas into these 4 bhavas. There is a unique presentation, Dharma bhava, Jnana bhava, Vairagya bhava, and Aishwarya bhava. It is quite unique to many of us, because Patanjali himself has said that whatever you chant, whether it is japa or something, jabatad artha bhavana, there should be that spirit of that word or mantra should be there. And another thing, she, as I told you, she liberated us from many of the fetters we used to have while practicing yoga. Patanjali himself has said, Vidarka Bhadani, Viparita Bhavana, and he finally described what is yoga as Chitta Vritti Nirodha. Now, our whole literature, there are many books which I would like to introduce you in the coming days. In the coming days, we will introduce more books. Yeah. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Dinakaranji, just one question. Are these 2 books available with you? Yes, books are available. What is the cost of both the books? It is 100 rupees only, 100 each. 100 each. The popular book among us is Science of Yoga by Taimani. Taimani, it is 400 rupees. Then there is a Taimani's book. Then there is a one small but interesting book by George Sidney, our 3rd president. Yeah, it's on Kundalini, Lotus Fire by Kundalini. A lot of books that I will introduce you. That's all right. So, thank you. Anyone can contact me or Dinakaranji for the books if they want. Or Dinakaranji, one more thing is the self culture also part of the yoga. This self culture. My favorite subject is the function, control, and sensation of the physical body in self culture. Also include in yoga. Yeah. Just a minute, Arvind ji, मैं नितल जी से पूछना चाहूँगा. Do you have you also written some books? No, I don't have any books which are written. Though I do have a YouTube channel, you can connect with me on my YouTube channel. You can give the links and all that. But just I thought that if you have also written in theosophy, yoga is a very popular subject or a kriya which everyone does. So your things will definitely help people to do it in the right way. Anyone else wants to ask? आबाजी आप पूछना चाह रहे थे इसलिए मैंने आपको हाईलाइट किया था. आबाजी प्लीज वीडियो स्टार्ट कीजिए आप. आबाजी चलिए शायद नहीं है तो सही. एनीवन एल्स? या आबाजी मैं थोड़ा सेल्फ कल्चर का जब जिक्र आया तो मैं ये दिखाने के लिए लाई थी कि ये बुक है सेल्फ कल्चर की. ये हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं इसका इन द इवनिंग IK टैबली जी की. और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा नितल जी ने बताया, उसके कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग भी योगा कर रहे थे और आई एम वेरी मच एग्री टू हर कि आजकल लोग एक्सरसाइज को ही योगा मान लेते हैं, बट योगा इज नॉट एक्सरसाइज. एक जो भी कुछ करें विद अवेयरनेस, अवेयरनेस इज मच मोर इम्पोर्टेंट. यदि हम प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, इफ वी डू इट विद अवेयरनेस तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है. अदरवाइज इट इज जस्ट रियली एक्सरसाइज. तो जो भाव आपने बताए दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. तो आजकल हम लोग PMC गुजरात पे सेल्फ कल्चर का ही स्वाध्याय चल रहा है. उसमें मैंने एस्ट्रल बॉडी लिया था, फंक्शंस ऑफ एस्ट्रल बॉडी. तो बहुत सारी चीजें हुई एंड आई होप वी विल डू इट. केवल कहना आसान है लेकिन करने के लिए हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, ऐसा मैं समझती हूँ. तो थैंक यू सो मच. बहुत धन्यवाद. आपने अपने संक्षिप्त में बहुत कुछ कह दिया. और कोई और जो संक्षिप्त में कहना चाहे? उदय कुमार जी आपने एड्रेस किया है, क्विकली कह दीजिए. फिर शिंदे जी हैं और यस उदय भाई, अशोधन भाई भी हैं. शिंदे साहब को सुनेंगे थोड़ा अबाउट द योगा. अरविंद भाई,
अरविंद भाई पहले उदय कुमार जी बोल रहे हैं, उसके बाद आएंगे शिंदे जी, आप चिंता ना करें, सब लोग आएंगे। हाँ उदय भाई, आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, आज का रोचक विषय के लिए और मैडम नीतल शाह, मैडम स्वाति और अरविंद नरवारे को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का युग ये योग का युग है और पतंजलि को योग सूत्र को माध्यम बना के जो शुरुआत के सेशन में बताया गया वो बहुत रोचक था। और खासकर गीता के जो एक वाक्य योग कर्मसु कौशलम, जो भी अपने अपने कार्य कर रहे हैं इसमें जो कुशलता है वो ही योग है। जैसा कि वो नौकरी करने वाला अपनी नौकरी में, वो धंधे करने वाला अपना बिजनेस में जो भी मन लगाकर करे वही योग है, वही कर्म योग है। दूसरा बताया गीता का एक वाक्य है समत्वम योग उच्यते, और दूसरा चित्तवृत्ति का निरोध वो योग बताया गया। तो वो अच्छी तरह से रजूआत किया गया। और जो अरविंद नरवरे द्वारा आज का जो ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में वो बड़ा रोचक था। और अभी सितंबर में वो एमपी और राजस्थान के कन्वेंशन में वो तैयारी कर रहे हैं, उसको सुनते हुए भी आज बहुत प्रसन्नता हुई। जी जी जी। हाँ, और योग का मूल ये बात है कि मैथमेटिक्स में ये कहा रहा है योग मतलब जोड़ना। तो अपना आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की जो क्रिया है उसको भी योग कहते हैं। और योग का विरोधी है वियोग, जो हम दूर होते हैं उसको वियोग कहते हैं। तो ये आज ये विषय बड़ा रोचक रहा और बहुत प्रसन्नता हुई, हमको बहुत सीखना मिला। बहुत बहुत वक्ताओं को आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। यस शिंदे जी। Thank you, Taral ji, and thank you all. And I must thank Nital ji. Yeah, Wonderful. She is herself is a yogi. I call her as a yogi, and whatever she spoke, it is really touched to our heart. That is what I can say her as a bhava yogi. And it is really wonderful, she explained. And she began with the Chittavritti Nirodha, what the Patanjali says, and Samatva Bhava and Yoga Karmasu Kaushalam, what Krishna has told in Bhagavad Gita. So she quoted two books, Bhagavad Gita and Patanjali Yoga. So both are really taking us to that union which we call yoga. And the very first sentence, Chittavritti Nirodha, is enough for us to contemplate. And when we know our inertia, activity, and harmony, that is due to our tamoguna, when it is tamoguna is predominant, our chittavrittis are different. When rajoguna is predominant, our chittavritti are different. And when satoguna is predominant, again our chittavrittis are different. And that kind of awareness we must develop. It is only then, if you are aware of your own inertia, activity, and also the good things, spirituality, sattvaguna, then those chittavritti nirodha, they come to that bhava, as Nitalji said, samatva bhava. But still I go further. When really there is a self-realization, when there is self-realization, then again chittavrittis are different. And when there is really God realization, also there is chittavrittis are different. It is only when it comes really a dharma bhava, swadharma surre paho. That is what in Dhaneshwari, who is a yogi, he has told. It comes to that stage, swadharma surre paho. Then you become that yoga karmasu kaushalam. So skill in action comes. So these are the bhavas which are influencing our actions. And Krishnamurti said, action in inaction, action in inaction, or inaction in action. Like this, that bhava comes
Really, thank you, Nital ji. You have changed our bhava. Thank you, Bhava Yogini. Thank you so very much, Srindeji, for actually listening so nicely. And I'm so glad that you were involved in the whole lecture. And I'm glad that you all have listened and accepted and grabbed the knowledge. And whatever I have given, it's not wasted and it's going to be useful. Thank you so very much. Nitalji, everyone here, most of them follow you, but with your addition, it will be more towards the right thing. Swati ji, I will ask you, because you are also too much experience in this. You can now speak in English so everyone can understand. So please tell us your experiences, or if you want to add few things, you have 1 or 2 minutes. Please add. I think Karma Yoga is something that I strongly believe in, because although I've learned theoretically all this knowledge, I just learned. I would like to just share one experience of mine when I was teaching. I thought I was teaching, but the children were teaching me. So when I was teaching in Kidwai Cancer Institute in the children's ward, basically we were teaching yoga through playway method, and all these children are cancer affected children, and we were teaching simple basic yoga for their digestion, because chemotherapy affects their digestive system. They get constipated and they are extremely weak. They cannot do anything much. So simple, very simple things we were teaching them. So initially when I was assigned to do this work, I was like, how am I going to do this? Seeing all these patients without hair and suffering and everything. It was very disturbing for me when I actually, when I actually went there, when I started, initially children were not, they were a little hesitant to come and attend the class. But once I started and started mingling with children, and since it was a playway method, and these children were not going to school, they were in the hospital most of the time. So this was like a school to them. So it was a playway method of teaching. And when I started teaching, they were so full of life. They were so happy. They were just there. They forgot everything. Children are like that. They live in the present. Actually, I thought I was teaching them, but they taught me to live in the present, because they know any moment, they know that they are going to die next moment, but they can be happy this moment. Wow, wonderful. That is something that I learned from them. Thank you so much, and hats off to you for doing this to those children. Correct. अरविंद जी, आप भी पीएचडी कर रहे हैं और योग आपका विषय है, तो कुछ अगर 1 मिनट में कुछ और समअप करना चाहते हैं तो मंच आपका है. बिल्कुल सर, सबसे पहले शिंदे साहब को मेरा प्रणाम. एमए योगा मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने कंप्लीट किया, और जब यूनिवर्सिटी टॉप हुआ तो इच्छा हुई, सभी लोग कहने लगे मेरे साथी की पीएचडी किया जाए. लेकिन अभी मैं कहीं कहीं योगा क्लासेस ले रहा हूं, और उसमें स्पेशली जो डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज, उनको मैंने शेयर किया है कि कहीं भी किसी को भी क्रॉनिक डिसीज हो तो हम योगा से उनको कैसे इम्प्रूव करें. एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, लेकिन योगा से मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि जो क्रॉनिक डिसीज है, मेरे 3 स्टूडेंट्स योगा से इम्प्रूव हुए हैं. वेरी गुड, थैंक यू सर. उनको मंडूकासन जो है, हमने देखा है कि उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है. जिनका 250 से ऊपर डायबिटीज रहता था लेवल, वो 150 तक आ गया. लेकिन वो कंटिन्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का हो, कंटिन्यू आप जो साइंटिफिक तरीका है, जो योग का तरीका है प्रॉपर करने का, जो आज इन्होंने नितल जी ने हमें वर्णन दिया, उस हिसाब से करें. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और नितल जी, अंतिम, चूंकि आपका मेन विषय था, आप कुछ 1-2 लाइन ऐड करना चाहती हो, फिर हर्षवर्धन जी को मंच देंगे. अर्चना जी, आप योग करती हैं, क्या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप भी पूछ सकती हैं. सर, मेरा एक क्वेश्चन है विद रिगार्ड, मैं शिंदे जी से एक क्वेश्चन करना चाह रही थी. उन्होंने रिगार्डिंग कहा कि जब हमारी चित्तवृत्तियां हैं, हर स्टेजेस पे अलग अलग होती है, ठीक है. यदि आप साक्षात्कार जिसको कहते हैं, उसमें भी अलग होती है, लेकिन चित्तवृत्तियां क्या उस स्तर पे रह पाती हैं? दैट इज माय क्वेश्चन. क्योंकि योग तो उनका निरोध है, तो चित्तवृत्तियां फिर कहाँ रहेंगी?
जब हमने उनका निरोध कर दिया तो फिर वो चित्तवृत्तियां कहाँ रही, या ये मेरा एक वो है। तो इसका आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। जस्ट प्लीज थ्रो द लाइट। No, it is Abaji. They won't end immediately. Chittavritti Nirodha, they won't end, because to bring balance between our tamoguna, rajoguna, and sattvaguna is a stage. And when that balance is attained, that comes to the samatva bhava. And when that samatva bhava comes, probably one may realization, self-realization may come to yourself. How this samatva bhava has taken to your own self, who is the true being within you. Yeah. And when you understand your true being, then you will realize you are not different from the God. You and the God are one. And when it is realized, but it is again realization. Still those chittavrittis are there, but only thing, when God is predominant within us, and that time only that becomes zero. But it is very difficult to, this is all conceptualization. We are not attained to that. Attained to that. Exactly, that I wanted to say. No. जब तक हमें attain ना हो, how can we say this is written only? Why I am telling this? Yeah. Human consciousness has got this power of expansion up to that level. And accordingly, we have a good ideal that we can be free from all these modifications of the mind. Mind principle itself connects us to the Buddhic principle. Okay. And that stage is achieved. That is what I want to add in this. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Heartfelt Can I gratitude. Yes, Nitalji, you can share it. add 2 lines to this? Yeah, please. So, I would first of all consider myself very small in this topic. All of you are very experienced over here. Normally what happens is we always want to learn everything as a theory. You might go to a psychologist who would tell you, don't think negative things. Don't look towards the negativity. Think positive. Do something positive. But when you come home, and now what happens? Your mind again starts thinking all those negative thoughts. If it was that easy to think positive, why would there be any negative thought in this world? If it was so easy to attain liberation, why would we live over here? I would directly jump to liberation. I don't want to do all these things, right? Because we know liberation is what we want. But it's not that easy to attain. It's easy to talk about. How can you attain this? That is always our question. And yoga, the 8-fold paths of yoga will take you to that liberation. You have to give yourself that time. You have to go through the tapa. You have to go through the Yama, Niyama. You have to give that dedication. Now, you do a nice manduk asana or a child pose with a full vairagya. Just let go nicely, fully. And after that, you tell me how it happens. You share your feeling. After that, you don't have anything to say. But right now, what is happening is we are talking theory. So there is always a question mark. How will this happen? This will not happen. Will this actually happen? Has anyone attained this? All these questions will go away when you will practice. I'll give one sentence over here to all my students. What is yoga? Melody khao, khud janja. Until you taste it, you are just talking about it. Yoga karo, khud jana. You
how to do it. And after that, you know, when you do it with the Vairagya Bhav, I took the Vairagya Bhav at the very beginning, because when I am into that Vairagya Bhavna, after that, I don't want to even continue with my class. I just want to be over there. Forget everything, forget all the students, forget the whole world, and just be over there. Now I have done that, let go. Now completely let go. Okay. So now what I do is, when I do the class, so when I'm taking the class, I don't do the asana, because or else my students will be nowhere after that. So when you perform Thank you it, so much. and then there will be no question in your mind. Nital ji will definitely have much more on this. Time is just ticking by. Archana ji, do you have any question? No. So you can conclude, Harshvardhan ji, within 1 or 2 minutes. आपके सुवचन दीजिए. Just one more line I would just like to add over here. Sure. I would like to invite all of you to my yoga classes that we have free of cost daily 6:30 a.m. 6:30 to 7 we have pranayam, 7 to 7:30 is basic yoga, and 7:30 to 8 is my Surya Namaskar. You send me the link and everything. I will propagate it. Yeah, and this runs. I make a group who are interested. Those who are interested, and then we can have all of those people there. So the time is auto utilized, and it reaches to the right people. Yeah. Yes, Harshvardhan ji. Yeah. Sir, boliye. Harshvardhan ji. Haji. Okay. First of all, let me congratulate Nital Shah. And this is really a nice session so far as this kind of subject is concerned. And Arvind ji, you translated very nicely in Hindi. Thank you so much. Really, it is wonderful. And to comprehend this kind of subject with a view to having the practice of doing it something, not only doing, listening to it, doing nicely, and thinking and pondering over that. That becomes a kind of practice. And this practice leads us to our own consideration, which even try to eliminate our limitations. And out of our limitations, what we learn, that becomes the practice of yoga. So our different kinds of understanding, our different kinds of food habits, our different kinds of thought processes are really in the way that comes as a hindrance or as the helpful kind of element. So practicing yoga becomes very fruitful. So Nital, whatever you just suggested about the word that is going to be built up in the mind, that becomes our bhav, right? A kind of feeling. And that feeling leads us to our own psyche. And this psyche gets change in the way that we become aware of our daily life, our daily thoughts, our daily habits. And in that way, we should be having such practice by the yoga that helps us to live the better life. So that is what we understand. So yes, purpose is not there. There is no purpose as such. Nirvikalpa Samadhi, no, two words are there. Vikalpa Samadhi is there, Nirvikalpa Samadhi is there. That is afterwards. But let us do it nicely. Let us form the habit of doing yoga. Let us not think over it. Let us not go more than the theory says. Let us not have our own kind of understanding in the way that what will happen. Okay, technically we should follow. And it is not the exercise, just you mentioned earlier, it is not the physical exercise. It is the exercise to understand our mind first. So this is really nice subject. So far as the time is concerned, we cannot have more deliberation on this, but we can deliberate nicely. And the books that Dinakaran has mentioned is really wonderful. Another book in Gujarati I am going to mention about, that is by Rohit Mehta. It is the Gita-ni Yoga Sadhana. Sir, please send me the cover of it later on. Yes, sir, I don't have, but I will show it. It is not lying here with me, but I'll find on net. I'll find on net. Sure. So out of this, we can learn so many things. We are the learners, we are the students, and we have to go on doing the practice. Always. So really nice thing that today this session has been very fruitful. I'm congratulating Taralji for imbibing such programs, and in that way
having this kind of concern on different subjects. That is that matters most. And Arvindji, you joined today. I feel very happy. On since Surat we met last, and today Yes, I saw yes. it. Yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you so In much, a true, sir. in true sense, we celebrated Independence Day. Yes. Correct. That was what I was going to say. Yeah. On Independence Day, we are Yes. actually having a health freedom by all this knowledge that we will हमारे जो श्वास थे उसी का हम एक तरह से फ्रीडम करेंगे, उसको स्वतंत्र करेंगे एक अच्छी चीज की। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और चूंकि अब 8:30 बज गए हैं, मैं सोचता हूँ सब लोग माइंड करें और नितल जी हम वापस बात करेंगे और दूसरे आगे योग के विषयों को लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी प्लीज आप समापन पूजा कीजिए। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर् न वा पंचकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप।
Shivoham.